TCTC SHAR 1 and 2. Go ahead. We observe all telemetry carriers are on. Noted. Sigma to control events 386, 387, 388, 389, 390 and 391 completed. Roger. Good evening and hearty welcome to all the viewers. I am Madhuri, welcoming you to the launch event of PSLV-C53 DSEO mission being telecast live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Centre, Shar, Srihorikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. नमस्कार, शुभ संध्या। हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं विकास स्वर्णकार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से उपस्थित हूं इसरो के एक और नए मिशन में। आज का यह मिशन PSLV-C53 एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। हमने पिछला मिशन PSLV-C52 EOS-04 के सफल प्रक्षेपण के साथ देखा और आज इसरो फिर से तैयार है अपने एक नए मिशन PSLV-C53 DSEO के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको समय समय पर मिशन के विवरण तथा अन्य जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। The launch will take place today, the 30th of June 2022 at 18:02 hours Indian Standard Time from the second launch pad. Apart from DD National, the live telecast is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. The PSLV-C53 is a commercial mission to launch DSEO satellite weighing 365 kgs at an altitude of 570 kilometers orbit with semi-major axis of 6,948 kilometers with 10 degrees inclination, and it also carries two co-passenger satellites. The PSLV-C53 being launched today is a core-alone version of reliable and versatile PSLV. The launch is very special for ISRO for several reasons. इसरो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ नवीन होता रहता है। इसरो इसमें सदैव तत्पर रहते हैं और नए नए अनुसंधान तथा परीक्षण करते रहते हैं। वैसा एक नवीन उपाय के तहत अपना उद्देश्य पूर्ण किए हुए PS4 चतुर्थ चरण PSLV के उनको पुनः त्रिअक्षीय स्थिर माइक्रोग्रेविटी के प्रयोग में लाया जाएगा। इन प्रयोगों का उद्देश्य छोटे वैज्ञानिक निर्धारों को 4 से 6 महीनों के लिए कक्षीय प्रयोगों को पूरा करना होता है। PS4 प्लेटफॉर्म में इसकी विशेषता इस संदर्भ में यह है
कि इस चरण में मानक इंटरफेस, पावर उत्पादन, टेलीमेट्री, टेलीकमांड, स्थिरता, अक्ष में सुनियोजित परिचालन तथा रखरखाव की पूरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस बार PSLV-C53 में प्रमोचन यान में भी यह चतुर्थ चरण में उपयोग किया जाएगा। इन कक्षीय प्रयोगों में पहली बार किया जा रहा है। जब PS4 स्टेज एक स्थिरीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तब यह प्रयोग किया जाएगा। एक समर्पित NGC तंत्र, जिसे नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल कहा जाता है, इसके उपयोग से अभिवृत्ति स्थिरीकरण प्राप्त किया जाएगा। इसे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है, शॉर्ट में POEM, पोएम। -2 minutes. इस बार PSLV-C53 में 6 निधभारों का वहन करेगा, जिसमें 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप मेजर्स दिगंतरा तथा मेजर्स ध्रुव एरोस्पेस के हैं और इन्हें इनस्पेस और NSIL के माध्यम से शामिल किया गया है। अब हम प्रमोचन से 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांच का पल होता है। न सिर्फ दर्शकों के लिए, यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात एक कर प्रमोचन यान तैयार किया है तथा उपग्रह तैयार किए हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही रोमांच का समय होता है। -1 minute. -55 seconds. All subs armed. -50 seconds. All sequences armed. -45 seconds. -40 seconds. PHPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PSPP open. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +5 seconds. Stop normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV-C53 performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। गर्जना करता हुआ PSLV-C53 आकाश में, आप देख सकते हैं कितना साफ नजारा है, बहुत ही रोमांच भरा नजारा। That's a marvelous liftoff, and the PS1 performance is according to the expectations for this mission. First stage performance normal. प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। Sharwan is in main auto. +1 Sharp is minute. in main auto. अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PSLV-C53 Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. Auto tracking SCBT1. यह चरण प्रथम चरण है जो First कि stage performance normal. 8.2 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान इस चरण में 4,846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी प्रदान करता है। It is 1 minute 45 seconds from launch, and the altitude attained is 49 kilometers. At 51 First stage kilometers, separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. +2 minutes.
प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. You can see the flight events on your TV screens. The recent one has been the initiation of closed loop guidance and PS2 currently operating. जी हाँ, It is 2.5 minutes from the launch. द्वितीय चरण 150 सेकंड का होगा। Second इस stage दौरान performance यह 800 normal. किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 174 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। इस चरण के दौरान दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं। Payload bearing separated. अभी अभी आपने देखा ऊष्मा कवच पृथक हो चुका है यान से तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। अब इसका अर्थ है अब जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। घने वातावरण से बाहर जाने की वजह से Second stage अब performance ऊष्मा कवच की normal. जरूरत नहीं है, इसलिए उसे पृथक कर दिया गया है। Shar and Port Blair stations currently tracking the launch vehicle trajectory. The second stage of PSLV increases the velocity of ongoing launch vehicle from Second 1.4 stage kilometers per performance second normal. to 4 kilometers per second. Plus 4 minutes. द्वितीय चरण का प्रदर्शन सामान्य। अब कुछ ही सेकंड्स में यह बंद हो पृथक किया जाएगा यान से। उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण का Second प्रज्वलन stage शुरू होगा। separated. Third stage ignited. The second stage has been separated and the third stage called the PS3 has begun Third its stage operation. performance normal. It is a solid propellant based motor. It increases the relative velocity from 4 to 7.2 kilometers per second for the mission requirements. Thrust developed is 240 kilonewtons. PS3 का प्रज्वलन काल 125 Plus 5 सेकंड का minutes. होगा। इस दौरान यह 335 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। तृतीय चरण के अंत तक यान की गति 7.259 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। Third stage performance normal. The total burn time for HPS-3 is 132 seconds. Plus 6 minutes. In this duration, it will add 60 kilometers to the altitude. अब कुछ ही क्षणों में PS3 Third बर्नआउट stage हो action जाएगा। completed. जी हाँ, प्रज्वलन समाप्त हो चुका है HPS3 का। Vehicle in combined hosting phase. अब यह कंबाइंड कोस्टिंग फेज पर है, जिसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज कहते हैं। यह फेज 200 सेकंड तक चलेगा। तत्पश्चात PS3 को पृथक कर दिया जाएगा। Plus 7 minutes.
अब हम 420 Vehicle सेकंड की दूरी performance पर आ is चुके हैं। normal. सापेक्ष गति 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई है 270 किलोमीटर। Now, though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the next 200 seconds, during which time there is 129 kilometers gain in the altitude. The coast phase exists while the rocket is 1000 to 2370 kilometers downrange from the launch port. Vehicle performance normal. Port Blair and Brunei stations tracking presently. Plus 8 minutes. यान के सभी तंत्र सामान्य काम करते हुए अपने उद्दिष्ट दिशा को पूरी तरह अनुसरण करता हुआ PSLV-C53 Vehicle performance normal. There is no thrust being developed presently, but the launch vehicle continues to be controlled. जी हाँ, इस दौरान Plus 9 minutes. हमारे ग्राउंड स्टेशंस जैसे शार्प, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने बैक ग्राउंड स्टेशंस में से वर्तमान में ब्रूने तथा बेयाक ग्राउंड स्टेशन यान के आंकड़े हम तक पहुंचा रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे PS3 स्टेज का पृथकीकरण। Third stage separated. There is a confirmation from the range operations director that the third stage has been separated, but Vehicle performance normal. the fourth stage and spacecraft are following their intended trajectory very closely. PS4 is yet to be ignited. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अपनी नज़र इसमें बनाए रखते हैं और उन्होंने घोषणा की है PS3 को पृथक कर दिया गया है तथा यान अपने सुनिश्चित पथ पर बढ़ता हुआ अब यह PS4 कोस्टिंग फेज में है। यह फेज करीब 304.6 सेकंड्स तक चलेगा। उसके पश्चात PS4 इंजन को इग्नाइट किया जाएगा। Plus 11 minutes. PSLV का चतुर्थ चरण PS4 व अंतिम चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसका प्रज्वलन काल 132.6 सेकंड का होगा और यह कुल 14.66 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न कर उपग्रह को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा। इन उपग्रहों में सर्वप्रथम DSEO उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा। Vehicle performance इसके normal. पश्चात क्रमशः DLA, न्यूसार तथा स्कूप 1 को अंतक्षेपित किया जाएगा। For this mission, the PS4 will function as
plus 12 PSLV minutes, Orbital Experimental Module, or the POEM activity, which performs in-orbit scientific experiments using the spent PS4 stage as an orbital platform. This is the first time that PS4 stage would orbit the Earth as a stabilized platform. Attitude stabilization is achieved using a dedicated navigation, guidance and control system. POEM derives the power from the solar panels mounted around the PS4 Vehicle tank performance normal. and a lithium-ion battery. It navigates using 4 sun sensors, a magnetometer, gyro and NAVIC. POEM carries 6 payloads, including 2 from Indian space startups Messrs Digantara and Messrs Dhruva Space, enabled through InSpace and NSIL. plus 13 minutes, अब हम प्रमोशन से 800 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Vehicle performance normal. पीएसएलवी को यूं ही भारत का विश्वसनीय यान नहीं कहा जाता। पीएसएलवी अब तक 54 उड़ानें कर चुका है। उसमें 3 विकासशील उड़ानें थीं तथा 51 वाणिज्यिक मिशन रहे हैं। इनमें से कुल 53 उड़ानें पूर्णतः सफल रही हैं। इस तरह पीएसएलवी की विश्वसनीयता संख्या 97.3% है और इस कारण से ही इसे इसरो का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। इसके 4 संरूपणों का उपयोग इसरो में किया जाता है। अलग अलग निदभार तथा कक्षा के अनुसार इनका चयन किया जाता है। वर्तमान में PSLV-C संरूपण में समायोजित यह यान करीब 523 kg के निदभारों को 570 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित करने जा रहा है। अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे PS4 का प्रज्वलन। Fourth stage engine started. plus 15 minutes, Fourth stage performance normal. The 4th stage has been ignited and it's developing intended thrust. It operates till the orbital parameters for the injection of satellites are achieved. We are 15 minutes 30 seconds from the launch. The altitude is 553 kilometers. Fourth stage performance normal. चतुर्थ चरण PSLV-C53 का सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। सर्वप्रथम DSEO की कक्षा प्राप्त की जाएगी जो कि 570.5 किलोमीटर की है तथा इसे 7.07 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष वेग से अंतःक्षेपित किया जाएगा। Fourth stage performance normal. Bayak and Brunei stations are still tracking. Speaking about the satellites taking right in this mission, the prime satellite DSEO is a 365 kg Singaporean satellite that carries an electro-optic multispectral payload with good imaging capability that will provide
full Plus color 17 images minutes. for land Post stage thrust classification cut off. and serving humanitarian assistance and disaster relief Satellite needs. injection conditions are achieved. Now the PS4 is realigning itself to the correct attitude for the satellite separation. अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में DSEO उपग्रह, नियोसार उपग्रह, स्क्रूप 1 उपग्रह जो कि सिंगापुर के हैं, उन्हें अंतक्षेपित किया जाएगा। अभी आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से यह कैमरा व्यू देख पा रहे हैं जिसमें DSEO satellite separated. मुख्य उपग्रह DSEO को अंतक्षेपित कर दिया गया है उनके उद्देश्य कक्षा में। Indeed, a jubilant moment here in Mission Control Center as the prime satellite DSEO has been injected into its intended orbit. You've been watching the onboard camera visuals. Next is the dual launch adapter separation, following which NeoSAR, Singapore's first small commercial satellite carrying a SAR payload, will separate. अभी कुछ ही क्षणों में हम साक्षी बनेंगे न्यूसार तथा स्कूप 1 उपग्रह के अंतक्षेपण के। NeoSAR satellite separated. Scoop 1 satellite separated. PSLV-C53 DSEO mission accomplished. Handing over to mission director. PSLV-C53 has successfully injected DSEO primary satellite and 2 other satellites into the desired orbit. PSLV-C53 DSEO mission is fully accomplished. Having deployed the DSEO NeoSAR in Scoop 1 satellites, the PSLV-C53 has accomplished its mission successfully. Hearty congratulations to the satellite customers, another feather in the cap of ISRO. And as we take leave from you, do continue to stay healthy and happy. Stay tuned for the address by Secretary DOS and Chairman ISRO. जी हाँ, हर्ष का पल यहाँ सभी तीनों उपग्रह उनके उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही PSLV-C53 DSEO मिशन सफलतापूर्ण हासिल कर ली गई। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। Good evening to all of you. PSLV-C53 has placed the customer satellites of NSIL, DSEO, NeoSAR and Scoop 1 in the precise orbit of 570 km with a 10-degree inclination. So congratulations to NSIL for accomplishing this yet another major mission in this month, June itself. The first being the GSAT-24 launch. Currently the satellite is in orbit, drifting to its intended location. So with this today's mission, all these 3 satellites are placed in the right orbit, and I hope that the further activities of the satellites will be taken up and the mission will be a complete success for our customers. And I wish all the very best to NSIL for major missions to take up in the coming days using PSLV. And PSLV is waiting for that to happen. Many more missions are on the way for the customers all across the globe to come and get successfully placed in orbit. So let me wish once again all the very best to PSLV team for this wonderful accomplishment, proving the high reliability and availability of PSLV for the global customers.
I also want to tell that after the primary mission, the PSLV 4 stage is now going to write some poems in orbit. The PSLV orbital experimental module is going to be functional after this, taking over the control of the 4 stage from the primary mission computer to another computer which will take on from that. And the PSLV 4 stage will be a stage which is powered, generating power on board and stabilized with attitude control, and also having certain experiments hosted by some of the very young startups enabled by InSpace, the Dhruva and Digandra. They have hosted their payloads for experiments on board PSLV, and these experiments will continue, and we will get details about its functioning in the next orbit. Until then, let me thank you and wish all the very best to all of you for watching this launch of PSLV once again from Srihorikota. So let me wish all the very best once again, and then invite the mission director, Sri Biju, for his comments. Good evening to all. A special good evening to all my colleagues and friends in different control centers as well as ground stations spread geographically at different locations. A few seconds back, all of us have witnessed a wonderful launch of PSLV. PSLV-C53, which is PSLV in its 55th launch, that is PSLV-C53, has majestically taken off from the second launch pad and injected 3 satellites, 3 precious satellites in their desired orbits. PSLV was in a different configuration this time. It is the core load. All those who are watching this program live and supporting Indian Space Research Organization and Department of Space for our endeavor to make our country proud on having our capability to launch, build, launch, and have the space program very effective for our country. Thank you so much once again.